In this lecture, we are going to discuss the thermodynamical effects in superconductors. So there are various types of thermodynamical effects such as entropy, specific heat, thermal conductivity, band gap, that is energy gap in superconducting state or normal state. So these effects are very prime importance for the development of the theory of superconductivity. So because as we know that what was the that is primitive process of the making superconductor in the past. So we take some metals or materials and then we cool down them up to their liquid helium range, that is 4 Kelvin. So therefore their resistivity tends to 0. So therefore because their resistivity tends to 0 and there are several, because we are decreasing temperature, so therefore because temperature is thermodynamical quantity, so therefore as we decreasing the temperature there are several thermodynamical effects that comes into play, so which plays a very important role in achieving the superconducting state. So therefore first and that there is a prime extensive variable, so that is known as entropy, which has a great importance in thermodynamical physics. So as we know that what is entropy? Entropy is with a very simple language, entropy is nothing but your randomness or measure of disorder of the system. Because जैसे मतलब अगर किसी सिस्टम को हम कह देंगे एनर्जी देंगे, मान लिया अगर हम गैस सिस्टम ले रहे हैं which is having a number of particles, so they are possessing internal energy, और internal energy है तो उसके पास अपने internal energy है तो उसके पार्टिकल क्या random motion में होंगे, तो they will follow the zigzag path because they are moving, so they will have kinetic energy. Due to that kinetic energy they move in the random orientation, in the random direction. So उसका रेंडमनेस और जो उसका रेंडमनेस है उसकी वेलोसिटी की वजह से, उसकी एनर्जी की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी. और जब अगर उस सिस्टम हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे मतलब उसमें हीट देंगे, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? उन पार्टिकल की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? जोर से उस गैस के कंटेनर के साथ बॉल्स के साथ टकराएंगे और आपस में टकराएंगे, तो मतलब देयर विल बी मोर रैंडमनेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. अब सुपरकंडक्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं. तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल हैं उस मटेरियल के वो क्या होंगे? दैट विल हैव उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रैंडमनेस कम हो जाएगी. सो देयरफॉर एज टेम्परेचर डिक्रीजेज आवर एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेज. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी वर्सेस and entropy versus your temperature. So for the normal material, for normal conductor, the entropy follows the linear pattern, that is it is a straight line, so it is decreasing with respect to time. But in case of superconductor, this entropy decreases very rapidly. So therefore we can say that entropy for this graph is for aluminum, for normal aluminum in normal and superconducting state. This is the graph. So we can say that entropy for aluminum in normal and in superconducting state is a function of temperature. So it has been shown here that the electronic structure of solid is mainly affected during the superconducting transition, because यहाँ पे तो smoothly decrease हो रहा है, but यहाँ पे क्या हो रहा है? Rapidly decrease हो रहा है superconducting state में. So therefore during the superconducting transition some or all of the thermally excited electron, जो मैंने बोला, जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. सो दे विल these excited electrons of the normal state gets ordered in superconducting state. So this order has been found to exist up to range of approximately, that is 10 to raised to power minus 6 meter, that is up to the micrometer range. The order of these thermally excited electron in the superconducting stage is achieved up to this range. So therefore this distance is known as coherence length. ऑर्डर मतलब क्या होगा? बिकॉज अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, बट टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी
वो डिसऑर्डर और रैंडमनेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन दोज इलेक्ट्रॉन और दोज पार्टिकल टेंड्स टू ऑक्यूपाई ए ऑर्डर्ड स्टेट, बिकॉज उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, दे विल ट्राई टू पोजेस द मिनिमम एनर्जी स्टेट, तो ऑर्डरनेस विल बी देयर, सो देयरफॉर दैट ऑर्डरनेस अप टू दिस रेंज इज नोन एज योर कोहेरेंस लेंथ. So we can say from this graph that in the superconducting state there is more orderness as compared to in the normal state. So therefore entropy plays a very important role in your normal state or in your superconducting state. So this, then the next, your thermodynamical variable that varies in your superconductivity, that is your specific heat. So specific heat is nothing but it is amount of heat to raise the temperature or by 1 gram 1 gram material and raise its temperature by 1 degree or 1 Kelvin by supplying that amount of heat. So that is known as your specific heat. So specific heat, it is noted by C. In normal conductor consists of two contributions, that is contribution from electronic part and contribution from your lattice. बिकॉज लटाइस होगा, कोई भी अगर मटेरियल हो उसका लटाइस स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, और लटाइस होंगे और उस लटाइस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे. सो द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पेसिफिक हीट कम्स फ्रॉम टू पार्ट्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एंड फ्रॉम लटाइस पार्ट. सो in both of the cases specific heat is proportional to absolute temperature linearly and cube of absolute temperature respectively. कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होगा वो क्या होगा, that will vary linearly with temperature, and जो lattice part होगा that varies with the cube of the absolute temperature respectively. So now this specific heat that is noted by C in the normal state consists of two parts, that is your electronic part and this is your specific heat part from your lattice in the normal state. So therefore this electronic part that is it is the function of your temperature, and it is the function of the cube of your absolute temperature. So therefore it is given as this electronic part is linear function of temperature, and this contribution from lattice is your function of cube of absolute temperature. So here A and B are nothing but your constants. So now we will plot your this C versus your absolute temperature. So here A and B are constants. Now we will plot C and T. So now from this first graph we have plotted this C by T versus T square. So therefore as we can say that from this normal state this is your linear with temperature and it is a straight line, but in superconducting state our CL जो हमारा lattice वाला है that will remain the same, and but the change will occurs only in the value of CE, and the contribution of electronic part due to the specific heat, it is not linear, and it is given by your CE is in proportional to exponential of minus delta by kBT, where delta is your energy gap or band gap. So CL तो हमारा सेम रहेगा, बट जो हमारा सुपरकंडक्टिंग स्टेट में जो क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ हमारा है इट इज़ नॉट लिनियर, इट इज़ ड्यू टू योर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, क्योंकि जो हमारा CL है वो तो हमारा लिनियर रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इफेक्ट आएगा सुपरकंडक्टिंग स्टेज में किसकी वजह से, वो आएगा इसकी वजह से, एंड इट इज़ योर गिवन बाय एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा बाय kBT, where kB is your Boltzmann constant and delta is your band gap which is given 1.4 K TC your critical temperature, और T लिख सकते हैं इसको, it's critical temperature, it is nothing but your band gap
पैरामीटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी वजह से चेंज हो रही है यहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की वजह से। लेटाइस का उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, वो तो सिर्फ लीनियर रहेगा। सो नाउ in the second graph we have tested the dependence of this CE with respect to temperature, and it is plotted, that is CE upon ATC, that is critical temperature, and this is critical temperature by your absolute temperature. So now it is also your, it is plotted in your logarithmic scale, so therefore it is also linear. So now this variation shows an amount of energy is required to excite the electron to the excited state in the superconductor. This means there exists an energy gap in case of superconductor. एनर्जी गैप इसकी वजह से, ये बैंड गैप नहीं होता तो क्या होगा, उसको जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, उसको हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये बैंड गैप नहीं होता था, वो सीधे चले जाना था उसने, मतलब थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी। पर यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ आल्सो ए बैंड गैप इन केस ऑफ योर सुपर कंडक्टर, एंड दिस एग्जिस्ट ड्यू टू योर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ योर स्पेसिफिक हीट पार्ट के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या आ रहा है, बैंड गैप आ रहा है। सो देयरफॉर thus we can say that this existence of gap has been confirmed by experimentally, that is by spectroscopical method, and BCS theory जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, that is Bardeen-Cooper theory, and it also explains the existence of this gap. So उस थ्योरी में अभी हम इस जो हमारा बैंड गैप है, ये बैंड गैप पैरामीटर ये बड़ा डेल्टा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो देयरफॉर दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ड्यू टू योर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में स्पेसिफिक हीट पार्ट क्या रोल है वो हमने डिस्कस किया, बिकॉज वहाँ पे लेटाइस का जो कंट्रीब्यूशन है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, और इस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में क्या आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, बैंड गैप आएगा उस बैंड गैप में। therefore this we can say that there is also a kind of a band gap in your superconductor. And next thermodynamical parameter is your thermal conductivity. So we can say that thermal conductivity, because अगर वहाँ resistivity क्या हो जाएगी हमारी, जब हम क्या करेंगे नॉर्मल किसी जैसे एल्यूमिनियम लिया था हमने, तो नॉर्मल स्टेट में क्या होगा, उसमें रेजिस्टिविटी होगी, पर जब उसका हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी, हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट योर थर्मल कंडक्टिविटी इज बेसिकली, that is sigma is reciprocal of your resistivity. So as your temperature decreases below critical temperature, thermal conductivity changes abruptly, that means it increases abruptly. So because your resistance or resistivity decreases as temperature decreases below critical temperature, as we have seen in previous lectures. So in case of impure or non-ideal superconductor, that is doped semiconductor etc., that is or intermetallic compounds, these the thermal conductivity increases as temperature decreases below critical temperature. So this is for impure and non-ideal superconductor, thermal conductivity increases as temperature decreases below temperature. But in case of ideal superconductors, thermal conductivity decreases with temperatures below critical temperature. So this is the behavior of superconductors thermal conductivity as temperature decreases below critical temperature. So now by determining this property of specific superconductors, we can extract significant information concerning the mechanism of conduction process. मतलब अगर हम इस थर्मल कंडक्टिविटी का बिहेवियर स्टडी कर लें सुपरकंडक्टर के किसी स्पेसिमेन के लिए, तो हम उस मटेरियल उस स्पेसिमेन का हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन प्रोसेस का मैकेनिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कंडक्शन किस तरह से होती है, हीट की उन सुपरकंडक्टर में हीट किस तरह से फ्लो करती है. So this is very important thermodynamical properties by studying the superconductivity. And then last but not least the energy gap, which we have established in your
the specific heat part, that there is a band gap due to this electronic contribution of specific heat. This contribution comes due to the change of electronic structure when temperature decreases below critical temperature. So the band gap exists in superconductor is basically different from your nature of band gap that exists in insulators. So the band gap in the insulators is tied to your lattice, that is there is a huge band gap and it is tied to your lattice. But in case of your superconductors, that is this band gap is tied to your Fermi level. So this is the band gap, this is the your band structure in your normal state, and this is the band structure in your superconducting state. So this is your Fermi level, below which all the states are filled and above which all the states are empty. So here in the superconducting state there exists a band gap which is tied to your Fermi level. This is tied to your Fermi level, and this gap is of the magnitude, that is 2 into delta. Delta is band parameter. So we can say that there is जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्या होगा, देयर इज अब्रप्ट चेंज इन स्पेसिफिक हीट एट क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, चेंज करती है एकदम से. और वो चेंज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की वजह से होता है. बिकॉज टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो उसका स्पेसिमेन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ. So we can say that in case of a superconductor, this band gap is basically is attached to your Fermi gas or Fermi level. So this gap is given by this 2 delta, that is this band gap Eg is given by 2 delta, where delta is band gap parameter जैसे मैंने आपको पहले बताया, and it is equal to delta is equal to 1.4 kb Tc. kb is Boltzmann constant and this is critical temperature, and this is for your gallium. So hence for gallium Eg will be 2 into 1.4 into kb Tc. This is nothing but 2.8 kb Tc. So in terms of electron volt, this can be written 10 raised to power minus 4 electron volt. This will be of the order of Eg. So band gap for your germanium will be 10 raised to power minus electron volt. So this band gap is a function of your temperature, and this band gap is also function of temperature, because temperature change हो रहा है तभी बैंड एग्जिस्ट कर रहा है ना सुपरकंडक्टिंग स्टेट में. बिकॉज नॉर्मल स्टेट में क्या था, वहाँ पे कोई बैंड गैप नहीं था, बस जब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है हमारा बैंड गैप भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और वो चेंज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट. सो लेट अस प्लॉट योर दिस बैंड गैप वर्सेस योर क्रिटिकल टेम्परेचर. सो दिस इज द प्लॉट वर्सेस बैंड गैप वर्सेस टेम्परेचर. So this is a band gap at particular temperature and band gap at absolute zero temperature. So this is temperature, absolute temperature versus critical temperature. So we can say that electrons present in the excited state behaves as normal electrons and cause the resistance, and they cause the band gap, and those in ground state, that is below band gap, behave as a superconducting electron. जैसे ये है, electrons in your excited state behaves as a normal electron, जो यहाँ पे होंगे that will behave as a normal electron जैसे इधर, and the electron below this band gap are known as your superconducting electrons. As temperature increases, more and more electron gets excited from available state to available state. Temperature increases, more and more electron will get excited to these available states, and they will cross this band gap, or you can say energy gap. Hence at critical temperature all the electrons are excited and no energy gap exists at critical temperature. Critical temperature पे हमारा band gap क्या हो जाएगा, that will reduces to 0. So at absolute 0 degree Kelvin the energy gap is Eg is equal to 0. This is this at an absolute temperature, this Eg is equal to 0. So ये ग्राफ से भी ये होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, दिस बैंड गैप विल बी reduces to 0. So
दिस इज़ वेरी सिंपल। सो क्या होगा, हम क्रक्स क्या है मतलब इस पूरी कहानी का कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारा बैंड गैप क्या हो जाएगा, दैट विल बैंड गैप विल नॉट नो मोर एग्जिस्ट। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सारे जो एक्साइटेड स्टेट से इस ग्राउंड स्टेट से इसको क्रॉस करके एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे, सारे चल जाएंगे जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुँच, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो बट जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर को अप्रोच करेंगे उधर क्या होगा, दिस बैंड गैप विल नॉट बी सिग्निफिकेंट एंड इट विल अप्रोच टू जीरो। सो दिस बैंड गैप एग्जिस्ट ड्यू टू योर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैंड गैप किसकी वजह से होता है, दिस कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्योंकि इलेक्ट्रिक जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होगा वैसे जो हमारा स्पेसिमेन है, सुपर कंडक्टर जो मैंने स्पेसिमेन लिया है, क्या होगा उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उसी की वजह से बैंड गैप आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लक्स क्वांटाइजेशन। जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी सुपर कंडक्टिंग रिंग को परपेंडिकुलर रखते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये रिंग है, हम इसका प्लेन का रिंग का ये ऐसे होगा ऊपर की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्लेन टू द दिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड अगर टेम्परेचर इस रिंग का क्या कर देंगे, इस टेम्परेचर क्या करेंगे उसका, जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस इसको रखेंगे और टेम्परेचर क्या कर देंगे बिल्कुल कम कर देंगे, देन दिस मेटल बिकम्स सुपर कंडक्टिंग। एंड जैसे नॉर्मल स्टेट में क्या हो रहा है, इधर मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, और जब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेज में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें पास हो रहा है उसको एक्सपेल कर देगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी पास थ्रू दिस metal at superconducting state, and this becomes a perfect diamagnet. So therefore and करंट क्या होगा उसमें, एक persistent करंट will फ्लो करेगा, वो तब भी फॉलो करेगा जब हम इस फील्ड को क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कर देंगे बिल्कुल रिमूव कर देंगे, तब भी क्या होगा उसमें से एक persistent करंट will tend to flow. So therefore that persistent current produces a magnetic flux, बिकॉज करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, वो परसिस्टेंट करंट, जब फील्ड को इसको रिमूव कर देंगे तभी करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट क्या करेगा, दैट विल प्रोड्यूस ए फ्लक्स, बिकॉज करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एंड दैट फ्लक्स इज क्वांटाइज्ड, एंड दिस क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय n is integer h upon 2e, h is your Planck's constant, and e is the that is charge of that particle that produces the your current. So therefore इसको हम ऐसे लिखते हैं n phi, therefore it is quantized because it is quantized by this integer where n is equal to 1 2 and 3, and this is phi naught. So this quantized flux is given as where phi naught is h upon 2e, and value of this, इसकी वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड ESU, एंड इट इसकी वैल्यू होती है 6.23 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी 2.068 10⁻15 टेस्ला मीटर स्क्वायर, बिकॉज फ्लक्स है ना इतना, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो टेस्ला फील्ड की यूनिट, और ये इतने एरिया में से फ्लो हो रहा है पर सेकंड में। सो वेयर दिस इज द क्वांटम ऑफ फ्लक्स, इट इज़ आल्सो नोन एज योर फ्लक्सॉइड। तो एक बार फिर से बोलूँ, जब अगर इस मेटल को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसको टेम्परेचर लो कर देंगे तो इट विल बिकम सुपर कंडक्टिंग, और जब फ्लक्स पहले इसमें फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, इट विल एक्सपेल्स ऑल द फ्लक्स when it becomes superconducting and becomes a paramagnetic. Therefore at this stage this only current will flow, जब इस फील्ड को हटा देंगे तो उस करंट की वजह से क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, that flux will be quantized. Therefore this is known as a fluxoid and this is known as your flux quantization.